गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और सुबह सुबह आज आप लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। एक तो पिछले कुछ वक्त से जो है आप लोगों से सीधे तौर पर मुखातिब नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सोचा कि एक जरूरी मसले पर जो है बात करने की आवश्यकता है। And we will try and keep this conversation both in Hindi and in English for the benefit of all of you who tune into this conversation or who watch it later on. बिकॉज हम और आप चैन की नींद सोकर सुकून से सुबह जाग रहे हैं, लेकिन आप सोचिए अगर ऐसे हालात हो कि आपके आंखों के सामने आपके घरों को जला दिया जाए, आपके अपनों को गोली मार दी जाए, और क्या सिविलियन क्या जवान मारे जा रहे हो लगातार। कुछ ऐसी भयावह हालत जो है वो बनी हुई है मणिपुर में। लगभग पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अगर कहूँ तो 3 मई से ही जो है ऐसे हालात बने हुए हैं मणिपुर में। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट why are we looking at this continued violence conflict within Manipur? What is the history behind this violence? What are the different contexts, the fault lines, the divides between the ethnic communities, and also, of course, what is the political system now doing? Where is the so-called peace process that has been announced really heading? तो मणिपुर के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कुछ ऐसे एक्सपर्ट वॉइसेस हैं जो इस क्षेत्र से हैं, जो इस क्षेत्र को समझते हैं, भले ही बतौर पत्रकार हो या फिर सुरक्षा के मद्देनजर। और जैसे जैसे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ जो है मैं आपको उनसे परिचय भी करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है किशलय भट्टाचार्य जी। किशलय वो जिंदल जो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म स्कूल है उसमें प्रोफेसर हैं, डीन हैं, ऑथर हैं, और लंबे समय से इन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर इनफैक्ट रिपोर्टिंग भी की है। साथ ही 2015 में दरअसल नेशनल सिक्योरिटी कमिटी काउंसिल की जो अंदरूनी कमिटी थी, इसके भी वो हिस्सा थे, एंड ही डिड इनफैक्ट विजिट मणिपुर ड्यूरिंग दैट पीरियड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्राउंड सिचुएशन। मेरे साथ नितिन सेठी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अलावा जो है न्यू इंडिया फाउंडेशन के साथ थे। नितिन सेठी विजिटिंग फैकल्टी भी हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, और खुद जो है इस क्षेत्र से आते भी हैं और इसीलिए मणिपुर को बखूबी समझते भी हैं। यशोवर्धन आजाद सीनियर आईपीएस अफसर हैं, और काफी सारे अहम पदों पर जो हैं आप काम कर चुके हैं, बतौर सीनियर आईबी में हो या फिर एज ए सीआईसी, और सरकार में भी जो है काम कर चुके हैं। विजेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो गृह मंत्रालय को बहुत नजदीक से कवर करती हैं द हिंदू अखबार के लिए, एंड शी इज वन ऑफ द फियरलेस वॉइसेस एक्चुअली। जो सबसे ज्यादा जो है जो सही सवाल पूछे जाने चाहिए सरकारों से, वो सवाल वो लगातार पूछती हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग दिस। मुझे पता है कि ये सुबह का वक्त है और शायद पहली कप ऑफ कॉफी लेकर जो है आप लोग हमारे साथ आए हैं। और इससे पहले कि मैं इतिहास पर जाऊं और इतिहास की बात करूं, मैं सिर्फ एक हाल के क्रोनोलॉजी की थोड़ी सी बात कर देती हूं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, वहां पर 2 जातीय समुदाय खास करके जिनके नजरिए से ज्यादातर जो है उनके प्रिज्म से देखा जा रहा है इस पूरे के पूरे मसले को, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। मेतीज और हम कुकीज की बात करते हैं। मेतीज पिछले 10 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर स्टेट जब मर्जर हुआ था भारत के साथ में, उसके पहले से उनके पास एसटी स्टेटस था, उनको वो जो दर्जा है शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो उनको दोबारा से रिस्टोर करना चाहिए। अब ये मामला कोर्ट में था। मणिपुर कोर्ट में एक सिंगल जज बेंच की एक ऑर्डर आई, और ये ऑर्डर आई 27 मार्च को, जिसमें कहा गया कि वहां जो सरकार है, वहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, दैट एन बीरेन सिंह जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन दे कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाए। और उसके बाद से प्रोटेस्ट्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, खास करके जो कुकीजोमी और जो नागा पीपल हैं स्टेट में, they started taking to the streets to protest against this order that was passed down by the Manipur in fact court, a single judge bench ruling। 3 मई को जो 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं राज्य में, उन्होंने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाला, एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी अगेंस्ट दिस एंटायर डिमांड कि मेतीस को एसटी का दर्जा मिले। और उस दिन जिस तरह से हिंसक वारदातें देखने को मिली, 54 लोगों की जान गई। At least 54 people have been killed. They were killed on 3rd May itself. Since then, at least 110 people dead, tens of thousands of people forced to
place forced to flee. तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि खास करके जो ट्राइबल लोग हैं, उनको उनके फॉरेस्ट लैंड से इविक्ट किया जा रहा है। सरकार की नीतियां गलत है। फरवरी में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। कुकीज की जो स्टूडेंट बॉडीज है, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें इविक्ट कर रहे हो, लेकिन कोई रिहैबिलिटेशन प्लान भी नहीं है। और लगभग जो है मणिपुर में इस वक्त लगातार हम देखें तो इंटरनेट शटडाउन है, और इसीलिए ठीक ग्राउंड से हमारे लिए मुमकिन नहीं था किसी को जोड़ पाना। मैंने काफी लोगों से बात करने की कोशिश की, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। और सरकार की एक ट्राइपार्टाइट टॉक्स भी चल रही थी कुकी नेशनल आर्मी, जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ में। उन टॉक्स जो ऑपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, इवन दोस टॉक्स वर सस्पेंडेड। सो कीपिंग इन माइंड दिस क्रोनोलॉजी, सबसे पहले तो अगर मैं अभी तुरंत इस वक्त की बात करूं, विजेता, क्योंकि आप चूंकि लगातार वहां से रिपोर्ट्स आप डाल रही हैं, आप अखबार में लिख रही हैं, आपको लगता है कि 3 मई से लेकर अभी तक जो हालात हैं, वो हालात बद से बदतर हुए हैं? थैंक यू स्मिता फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बट हाँ, बीच में एक ऐसा फेज आया था जब थोड़ी शांति हुई थी, पर अभी पिछले जब से होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहाँ पे होके आए हैं, उसके बाद से इंसिडेंट्स जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। और उन्होंने जब वहाँ पे वो गए थे तो उन्होंने मेती ऑर्गेनाइजेशंस और कुकी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों से बात की थी, और ये आश्वासन लिया था कि 15 दिन तक आप कुछ मत करिए दोनों साइड से, ईदर और, उन्होंने कहा था ईदर और साइड से कुछ नहीं होगा 15 दिन तक, और 15 दिन के बाद जो है हम स्थिति का जो भी है जायजा लेंगे। बट क्लियरली जब वो वहां पे थे भी, ये कुकी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब वो वहां पे थे तभी भी गांव को जलाए जा रहे थे, कुछ अबैंडन्ड जो घर थे उनको भी जलाए जा रहे थे। तो एक मैसेज देने की कोशिश हुई थी वहां पे कि ये जो पीस ओवरचर्स हैं ये शायद कारगर ना हो लॉन्ग रन में। बट उसके बाद से हमने देखा है काफी किलिंग्स हुई हैं। एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट भी हुआ था, एक बच्चे और उसकी माँ को और उनके रिलेटिव को एम्बुलेंस में जला दिया गया था, जबकि माँ जो मदर थी वो मेती थी। तो जब मॉब आती है तो देयर इज नो कंट्रोल, उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेंटर ने अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, पर वो जमीन पर मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा मणिपुर ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। कुछ पॉकेट्स हैं जो स्पेशली जो बफर जोन्स इन्होंने बनाए हैं, विच वाज मतलब पहले कभी हमने सुनने को नहीं मिलता था कि एक स्टेट में, एक कंट्री में बफर जोन्स बनाए जाएंगे दो कम्युनिटीज को दूर रखने के लिए। तो ऐसा भी देखा गया है मणिपुर में। और अभी कल परसों की ही बात है जब 9 मेती आदमियों को मार दिया गया, और उसके बाद भी उसमें काफी, मतलब ये सिंगल एक दिन में सबसे ज्यादा मतलब ऐसा इंसिडेंट था जब से मई 3 से ये वायलेंस शुरू हुआ है। तो क्लियरली अब आप अगर अधिकारियों से बात करें, वो कहते हैं कि सिचुएशन नियंत्रण में है। बट एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, एक बहुत इंफॉर्मेशन ब्लॉकेट भी है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट काफी कुछ छुपा रही है। उन्होंने ऑफिसर्स को मना किया हुआ है मीडिया से बात करने के लिए। हमारा जो ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिटिंग हियर, मतलब यहाँ दिल्ली में बैठ के, वो वहाँ के अधिकारी ही हैं, क्योंकि काफी एग्जैजरेटेड क्लेम्स आ रहे हैं कुकीज की तरफ से, चीज की तरफ से भी। तो उसको वेरीफाई करना, उसको सिफ्ट करना, ये हमारा काम है। और गृह मंत्रालय की तरफ से जो बुलेटिन रोज आनी चाहिए वो आती नहीं है। सो ये सब भी है कि इस इंफॉर्मेशन ब्लॉकेट में, इसमें हम सच कैसे पता लगाएं, ये एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। Right. There is an absolute information, in a way, a black hole. Also, a lot of, in fact, propaganda wars at stake. For journalists who are reporting, they are also facing the heat, feeling a lot of threats, in fact, because they're getting tagged as either pro one community, anti one community. So there is a lot of real threat of physical violence also that journalists on the ground may face. Kishalai, coming to you, because, you know, आपने भी conflicts बहुत सालों तक आपने cover किया है. आप जिस तरह के हालात आप मणिपुर में देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्या ये कहना गलत होगा कि वहां लगभग एक गृह युद्ध जैसे हालात हैं? क्या वो सिर्फ कुछ पॉकेट्स तक कंटेन्ड है? हाउ डू यू रियली डिफाइन द स्केल ऑफ द वायलेंस? बिकॉज आई नो कि मणिपुर में इस तरह की वायलेंस की इंसिडेंट्स पहले भी हुई हैं, बट कंपेयर टू द पास्ट, हाउ डू यू डिफाइन द स्केल ऑफ द वायलेंस दिस टाइम?
Thanks, Smita. Please bear with my voice. I've got a bad throat. I am not on the ground, but I spoke to the crew members out there, and what they told me is that this is probably the worst that they have seen in Manipur. तो ये जो गृह युद्ध कह रहे हैं, ये शायद 2001 से हम कंपेयर कर सकते हैं. 2001 में वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी लेकर काफी एक सिचुएशन हुआ था in Manipur, which was very violent, which went on for months, and this is probably close in comparison to that. But they say that this is perhaps worse than what happened even in 2001, which is a matter of great concern. If it happened in any other part of the country, I think president's rule would have been recommended. There is absolutely no reason why the government of the day should be allowed to function out there. The chief minister और ये उनके पूरे cabinet और वहाँ की पूरे law enforcing machinery जो है has completely and utterly failed. So I think the first point which the home minister should have addressed was to ensure some amount of semblance of peace. Now that hasn't happened, and that is unlikely to happen. What is behind that is what makes me very curious. Why would the government, even after 1 month in the center and the state, allow things to slip completely out of control? और मुझे ये मेरा अपना एक theory है, but I'm quite convinced that what lies at the heart of it is land, which is going to be up for grab. As you know very well, that the majority of population in Manipur live within 10% of the state's land, which is the rice bowl, the Imphal Valley. A sparse population resides on the remaining hills, which constitute larger part of the land, on which the Meiteis or the majority community, who converted to Hindu Vaishnavism 300 years ago, do not have access to in terms of buying land. And just like today, we can imagine a situation where we can go to Jammu and Kashmir and buy land. I suppose that this is a way of opening up, of grabbing land. And I'm using the word grabbing with responsibility because I think this is a matter of land grab more than anything else. So this is my personal opinion that the heart of this conflict lies land. But then there are various layers, and I think as journalists, as policymakers, as bureaucrats, it's very easy to wash this off by saying it's very nuanced, it's very complicated, it's very layered. But I don't think it's very complicated to save lives. I mean, I don't think so. This should be very complicated to be able to save lives. I don't understand why it's complicated suddenly when it comes to Manipur, or suddenly when it comes to Nagaland or these places. So as I understand now, the law and order machinery does not exist. That's zero. It is also an effort to bring back the Armed Forces Special Powers Act in areas where it was, kind of withdrawn from. So, okay. Yeah, so this is where I look at Manipur from a distance now, and I think what we had alerted the government in 2015, that after a period of 3 decades of violence, armed violence, which was separatist in nature, insurgency, there are various insurgent groups, almost to the count of 50 at one point of time, when you combine all the various tribes and all the various valley groups. And that was on the wane, which is the classic way of how insurgency operates. There will be fatigue, and there was fatigue. And we cautioned that the next 20 years, we anticipate there will be bloody ethnic strife across the region. And it is playing out. There is enough evidence to corroborate why we said that. It was not some kind of a prophecy. And it is going to get even worse, not just in Manipur, but in other places. We've seen how Assam and Meghalaya
went to war over border skirmishes. We know how Assam and Arunachal Pradesh are constantly having border conflict. There are various other tribes and ethnic communities across the region, but this seems to be really deadly. Because it's a highly militarized zone. B is that there is complete sanction by the government of India and the government of Manipur on raising of vigilante groups who are on camera, on video, using automatic weapons, actually hoisting their own flag, saying that they are, the vanguards of Meitei nationalism. Similarly, the Kuki Kuki militant groups, which were at one point, when I last reported from there, there were 23 of those groups. Many of those groups continue to operate out of, rehabilitation centers. Mr. Chidambaram was the Home Minister when he signed the SOO, which was the suspension of operations with them, another avatar of ceasefire. Now, I'll just quickly there's the last point that I want to make out here is that the conundrum with the term peace process. Peace process is a borrowed term, from the Israel-Palestine thing. It's an American usage, actually, that we got. I don't think so there is anything called peace process. Peace process is a euphemism of saying that we don't know what the solution is, so let's put it into a process of slow burner and let it go on. Let it frustrate the parties involved in the negotiation so that they give up what they are going to do at a huge collateral. We've had a ceasefire with the Naga groups at a huge collateral. We had ceasefire with Boro groups, with various groups. I mean, there's just like unending number of ceasefires that we've had in various parts. What ceasefires do is that they corrupt the system from within. They legitimize vigilantes groups. They put people against people. So you had the surrendered alpha militants killing the alpha militants in those really dark years in Assam. Out here, the ceasefire and the suspension of operations with the militant groups on either side that the government has been going on since 2010. Right. Nothing really, because many of them continue to have guns, which is the same story, whether in Bodoland, whether in Nagaland, whether in Manipur. And the effect and the impact of it is for us to see today of how people are moving around with sophisticated weapon openly. If this militarization was not there, I don't think so the fatality would have been so high, or they wouldn't have threatened to continue with this kind of violence forever. ओके किशल, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर जो है हमारा ध्यान खींचा है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं कि एक तो आप इसे जमीन की लड़ाई के तौर पर देखते हैं, दूसरी बात है कि जिस तरह से सीज फायर्स को लेकर या पीस प्रोसेसेस को लेकर सवाल खड़े होने चाहिए, उनकी खास करके फ्यूटिलिटी पर या उनकी एफिशिएंसी पर। और इसके पहले कि अब मैं नितिन और मिस्टर आजाद से इतिहास पर बात करूं, विजेता, मुझे पता है कि आपको जल्दी जाना है। मैं आपसे बस 2 सवाल लेना चाहूंगी कि ये जो अभी जिस पीस प्रोसेस की अब अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें गवर्नर साहब को कहा गया है, 10 जून को नोटिफाई किया गया कि वो इस प्रोसेस को लीड करेंगे, एक्चुअली हु इज कॉलिंग द शॉट्स पीस प्रोसेस के टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करने के लिए? ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सवाल है, क्योंकि जब हमने कुकी ग्रुप्स और मेती ग्रुप्स दोनों से बात की, दोनों के मेंबर्स ने यही कहा कि जिनका नाम जो 51 की जो लिस्ट है, उन सब ने यही कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं और हमारा नाम डाल दिया। तो ये पता नहीं गृह मंत्रालय की कौन सी स्ट्रैटेजी है कि बिना पूछे लोगों का नाम डाल दो, और उसके बाद उन सब ने विड्रॉ कर लिया कि हम तो बात ही नहीं करेंगे। कुकी ग्रुप्स ने तो ये कहा कि चीफ मिनिस्टर है उस पैनल में और उनके सपोर्टर्स हैं, तो जो हम पर अटैक लॉन्च कर रहे हैं, हम उनसे ही कैसे बात कर लें। और इस पूरे चीज की विडंबना ये है कि कुकीज जो है वो इम्फाल आना नहीं चाहते, मेतीज जो है वो हिल रीजन्स में जाना नहीं चाहते। तो ये एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए था, या फिर एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए थी पीस टॉक्स के लिए। बट ये क्लियरली पता नहीं किस का सजेशन था, ये बहुत ही फेल हो गया, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आ रहा है बात करने को। क्या आपको लग रहा है कि इसमें गंभीरता है, या ये एक सिर्फ टाइम बाइंग प्रोसेस नजर आ रहा है आपको? टाइम भी बाय नहीं कर पा रहे हैं वो एक्चुअली में।
हाँ, क्योंकि जब होम मिनिस्टर वहां पे गए थे, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। उसके बाद फिर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी को भेजा गया। वो जाके ग्रुप से अलग अलग डेडलाइन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें 7 दिन दे दो। तो ये 15-7 ये ऐसे कब तक खिंचेगा? और कोई डिसाइसिव एक्शन जो सेंटर की तरफ से होना चाहिए, वो अब टाइम आ गया हो। क्योंकि आप अगर सोचिए, यही चीज अगर कश्मीर में हुई होती, एक वेपन वहां पे गायब हो जाता है तो कितना हल्ला मच जाता है। यहाँ पे 4,000 से ज्यादा पुलिस आर्मरी से वेपन लूटे नहीं गए हैं, वेपन दिए गए हैं विजिलेंटे ग्रुप्स। और इस पे आप फिर जाके प्लीड कर रहे हो कि ड्रॉप बॉक्स बना रहे हो कि प्लीज डाल दो, प्लीज डाल दो। मैं समझती हूँ कि दोनों सिचुएशन काफी डिफरेंट है, बट लॉ तो लॉ होता है, और हम ऐसा ट्रीटमेंट किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री में तो नहीं देखते हैं। सो काफी लॉन्ग वक्त दिया गया है। और जैसे कि अभी वो बता रहे थे कि ये जो सारे वेपन्स हैं, यही यूज हो रहे हैं, ये जो इसको जो पीपल्स वॉर जो हम कह सकते हैं, जो आपस में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जो एथनिक वायलेंस, और एक और अटेम्प्ट हो रहा है इसको कम्युनल कलर देने का। पर जब अमित शाह जी वहां पे गए थे, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये एथनिक वायलेंस है। अब ये क्या शेप लेगा फ्यूचर में, किसी को नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि जो जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब अमित शाह जी गए थे तो चीफ मिनिस्टर जी वहां पे हिल एरिया में नहीं गए। और जो उनके डीजीपी थे उस समय, जो एक कुकी है मिस्टर डाउंगेल, पी डाउंगेल, वो जो है वो किसी भी मीटिंग में इम्फाल में प्रेजेंट नहीं थे। तो ये एक बहुत ही स्टार्क ऑब्जर्वेशन है कि ये किस तरह का सिस्टम है कि you are being defined by your ethnic identity when you are leading a state or when you are holding a constitutional post. So ये एक हम कहीं भी ऐसा, मतलब ऐसे रिसेंट मेमोरी में मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि अगर कुकी हो तो आप इम्फाल में मीटिंग में नहीं बैठोगे, अगर आप मेती हो तो आप हिल्स में नहीं जाओगे। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम स्टेट एज ऑफ नाउ। और इसी के वजह से हमें ये दिखता है कि ये जो शिज्म है और ये जो इनका डिफरेंसेस है, ये कितना स्टार्क है। एंड गृह मंत्रालय के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इसको ये कैसे रोपिन करेंगे। और ये एक गृह मंत्रालय को, सेंटर को बेसिकली पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ना होगा कि बिना पूछे लोगों का नाम डाल दिया जस्ट बिकॉज यू नो दे आर सिटिंग फार ऑफ इन मणिपुर। आप कुकी और मेती को छोड़िए, मैंने एक नागा रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछा कि आप उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरा नाम मुझसे बिना पूछे ही डाल दिया। उनकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ये किस तरह का पीस कमिटी बना है? तो इस पे काफी सवाल उठते हैं। तो विजेता, एक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो। ये आपने कहा कि बहुत एक लॉन्ग रोप दिया जा रहा है, बेसिकली यू नो पीपल हु आर एट फॉल्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज कोलैप्स्ड, व्हाई दिस लॉन्ग रोप आल्सो टू एन बीरेन सिंह? व्हाट इज योर सेंस? आई मीन, सरकार की पैटर्न रही है वैसे कि जिन लोगों पर आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, उनको उनके पदों से हटाया नहीं जाता है। वो बृजभूषण सिंह का मामला हो, उसके पहले दूसरों का मामला हो, एमएल खट्टर का मामला हो। इस केस में आपको क्या लग रहा है, क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है बीरेन सिंह के सपोर्ट में? एक तो है कि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि डबल इंजन सरकार है, अगर वो बीरेन सिंह को इस समय हटाते हैं तो वो उनका वो जो क्लेम है वो फेल होता दिखता है। सो डबल इंजन, वेयर इज द डबल इंजन? और बीरेन सिंह को दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया है एंड ही हैज अभी तक, पिछले 2 हफ्ते तक तो उनका काफी सपोर्ट था वैली में। और अगर बीच में से ऐसे हटाना तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, खैर लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स हो ही गया है वहां पे, कम्युनिटी वाइज पुलिसिंग हो रही है। तो ये काफी भयानक चीज है। तो मतलब डबल इंजन की, अभी तो सिंगल इंजन की भी ताकत नजर नहीं आ रही है, और प्रधानमंत्री भी जो है बिल्कुल पूरी तरह से मम हो रखे हैं, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया विजेता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो नाउ लेट मी गो टू यू नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, द हिस्ट्री ऑफ इट। ये मेन जो मुद्दा है, जो नस्लीय हम समुदाय की लड़ाई की बात करते हैं नितिन, उस पर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये कुकीज और मेतीस की जो लड़ाई है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, इसके इतिहास पर हमें जरा सा ले जाकर जो है आप बताएं। जी, शुक्रिया स्मिता, मुझे आप इस शो पे बुलाने के लिए। एक कैविएट की, मैं कुछ जिंदगी वहां रहता हूँ, मेरा कुछ परिवार मणिपुर से है, कुछ अरुणाचल से है, तो मैं उतनी समझ नहीं रखता जो वहां से अगर आपके साथ कोई जुड़ सकते, जितना समझा पाते अपने पर्सपेक्टिव से, शायद वो तो नहीं, पर थोड़ा बाहर से ही देख के जो मुझे समझ आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जब मेनलैंड इंडिया से
सुनते हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत कम है उस इलाकों से, और हमारे बहुत कम लोग वहां जाते हैं या समझना चाहते हैं, और एक डिग्री ऑफ रेसिज्म भी रहा है जिसकी वजह से वो दूरी बनी रही है। हम लोग सब जब सुनते हैं कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, तो हमारा एक बड़ा स्टीरियोटाइप इमेज बन जाता है जो मेनलैंड इंडिया में शायद चल भी जाए। दोनों कम्युनिटीज जो वहाँ पे मैते और कुकी और तीसरी कम्युनिटी नागाज है, एक तरीके से देखें तो तीनों हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं, और तीनों एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स देश के साथ उनके रिश्ते अलग से रहे हैं। सब कम्युनिटीज ने, तीनों मेन कम्युनिटीज ने वहां पे अलग अलग किस्म के सब नेशनलिज्म के मूवमेंट्स चलाए हैं। मैतेज में ग्रुप्स रहे, अंडरग्राउंड ग्रुप जैसे किस्ले बोल रहे थे, और सिविल सोसाइटी में भी एक डिमांड रही है टू बी सेपरेटेड आउट। इट हैज गॉन ऑल द वे फ्रॉम नेशनलिज्म टू सब नेशनलिज्म। ग्रेटर नागालैंड का तो अभी तक हमारी नेगोशिएशंस चली रही हैं विद द नागा लीडरशिप्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुकीज में भी डिजायर रहा है कुकी लैंड होने का, अपनी एक घर होने का बाकियों से अलग। इसमें इत्तेफाक की बात है कि अर्ली 18th सेंचुरी में मैते कम्युनिटी में हिंदुइज्म आया, तो उससे इंप्रेशन ऐसा बनता है जैसे मैते सारे हिंदू हैं और वैसी पूजा पाठ करते जैसे इस साइड पे किया जाता है, जो कि नहीं सच है। एक सिंक्रेटिक किस्म का हिंदुइज्म बना समय के साथ, एक मिक्स किस्म का, क्योंकि उनके अपने विश्वास का तरीका है, साना मही जिसे बोलते, उनके अपने रिवाजों में और जिंदगी जीने के तरीके में समय के साथ हिंदुइज्म से परे होने का भी एक पूरा मूवमेंट चला, जो मैते नेशनलिज्म का रूप लिया। एक समुदाय है जो हिंदू बामन कहलाता है वहां पे, जो नहीं इतना इसमें इन्वॉल्व, लेकिन बहुत सारा मैते कम्युनिटी हिंदुइज्म से दूर भी जाना चाहता था। एक रिवाइवल, सेंस ऑफ आइडेंटिटी रिवाइवल भी हुआ, विच वॉज पार्ट उनके सब नेशनल मूवमेंट का। इसमें क्योंकि ओवरलैपिंग जमीनें हैं और ब्रिटिश एरा से लोगों को डिवाइड किया गया वैली और हिल्स में, लोगों ने अपने एरियाज, कमांड एरियाज को एक तरीके से बोला कि ये हमारा होमलैंड है, यहाँ पे हम अपना वर्चस्व चाहेंगे, और वो ओवरलैप है, इसलिए कम्युनिटीज के बीच में झड़प हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और फ्रिक्शन रहता है। इस जमाने का काफी जमाने से है। नागा इंसर्जेंसी अगर हम जाने तो, और वो मूवमेंट बोलेंगे, one of the oldest movements in India looking for either sub-nationalism or nationalism separate from India. And Indian state, जैसे किस्ले बोल रहे थे, for good or for bad, इन सब ग्रुप से अलग अलग तरीके से डील करते आया है। किसी को टेररिस्ट करार करके बंद करना या उनसे बात बंद करने का तरीका नहीं रखा गया है। हमेशा अलग अलग टैक्टिक्स है, यहाँ तक कि इंडियन स्टेट में बोलूंगा कुछ ग्रुप्स खुद बनवाता है कि तोड़ जोड़ की नीति भी वहां पे चलाए, कुछ ग्रुप्स को वो सपोर्ट करता है, दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट करता है, और हर वक्त हर एक को साथ लाने की, इवेंचुअली बिठा के ठंडा करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये कंटेस्टेड टेरेन है, इस किस्म की भाषाएं कि ये टेररिस्ट है और इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगी, वो इस इलाकों में नहीं चलता है। और ना ही इंडियन स्टेट ने ये करने की कोशिश करी। कुछ ग्रुप्स के साथ कभी किया, कुछ ग्रुप्स के साथ फॉर्मली बात करी, कुछ ग्रुप्स के साथ इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स के थ्रू बात हुई, लेकिन रिश्ते ऐसे बने रहे। और ये हमेशा एक अटेम्प्ट रहा है स्टेट का कि एक डायनामिक पीस बना के रखे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कंप्लीटली एक पीसफुल जोन रहा हो। वहां पे आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स रहे हैं, कुछ कभी ओवरग्राउंड सीज फायर में, कुछ एक इस किस्म के रिश्ते में कि ठीक है आप कैंप में रहेंगे, कैंप से बाहर नहीं आएंगे, आपकी बंदूकें बंद रहेंगी जब तक सरकार से आप एक बड़ी डील नहीं कर पाते हैं। इस सबके में कम्युनिटीज के अपने एस्पिरेशंस पिछले कुछ दशकों में बदले हैं। ये सच है कि सब लोग आखिरकार, चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, संपन्न होना चाहते हैं, बेटर होना चाहते हैं। जो यूथ है, अगर आप चाहे कुकीज में देखें, लमका जो शहर है उनका, वहां देखें, या इम्फाल में आज जाए और देखें, आज तो नहीं पर यहाँ से आज से 2 महीने पहले जाते,
तो आप देखिए दोनों कम्युनिटीज में और नागा कम्युनिटीज में बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं और बहुत कर रही थी छोटी छोटी चीजें, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेंस बन गया था। लेकिन उसके बीच में जो किस्ले ने रेफरेंस दिया कि एक कंटेस्ट ये भी था कि वहां डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक हिस्टोरिकल टाइम से स्क्यूड रहा है। जैसे किस्ले ने बताया कि बहुत सारी पॉपुलेशन इम्फाल वैली, वहां पे और भी वैलीज हैं लेकिन इम्फाल वैली जो कैपिटल है, मैते लार्जली वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो गए ब्रिटिश पीरियड से, लेकिन क्योंकि कैपिटल है तो और लोग भी वहां बाकी हिल से आ रहे हैं और वो डेंसली पैक्ड एक अर्बन एरिया बनते जा रहा है। हिल्स हैं जहां कुकी और नागा डोमिनेशंस हैं और जहां ओवरलैप्स भी है पॉपुलेशन के, और ये दो एक तरीके से मैं बोलूंगा अम्ब्रेला कम्युनिटीज हैं जिसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। ये कुकी और नागा जैसे हम नाम देते हैं कुकी चिन्जो, ये एक अम्ब्रेला आइडेंटिटी बोल सकते हैं इन दोनों को। इसके अंदर बहुत सारी सेपरेट कम्युनिटीज रहती हैं जो कभी ज्यादा करीब कभी थोड़ा दूर आपस में, लेकिन जनरली एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं, एक तरीके से एक फिलियल रिलेशनशिप मानते हैं। हिल्स में क्योंकि ब्रिटिश पीरियड से ऐसे रहा और इंडियन गवर्नमेंट ने वो परपेचुएट किया कि मैते कम्युनिटी ऊपर जाके जमीन नहीं ले सकता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बने जिसकी वजह से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेस मिली हिल एरियाज के लिए। अब इस फ्रिक्शन को कॉन्स्टेंटली मैनेज किया गया है बाय द स्टेट और ये बहुत मुश्किल मैनेजमेंट था। और इसमें बीच बीच में आप देखेंगे कि चाहे वो कुकी नागास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रही हो, मैते और कुकी के बीच में कुछ कुछ हुआ हो, या नागा मैतेज के बीच में हो, या जो मैतेज हैं और पांगल मैते जो कि मुस्लिम मैतेज हैं उनके बीच में फ्रिक्शन रहा हो, ये स्टेट ने कॉन्स्टेंटली मैनेज करने की कोशिश करी है। एक परफेक्ट सोल्यूशन कुछ नहीं होता, ये एक बहुत डायनेमिक सोल्यूशन जब भी अर्जेंसी आ रही होती है लाया जाता था। और इसमें पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस और जिसको इंडियन स्टेट क्राफ्ट कहेंगे सबका हाथ रहा है कॉन्स्टेंटली। एक तरीके से मैं बोलूं कुछ लोग को बुरा लगता है लेकिन इंडिया एज अ स्टेट ने मणिपुर और बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक अलग दायरे में रख के अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिश करी है। उनका रिलेशनशिप एन एवरेज सिटीजन इंडिया के साथ जैसा होता है वैसा नहीं रहा है। कंट्रोल करना, एक तरीके से लैंड और रिसोर्सेज और पीपल पे कंट्रोल रखना और उसको एक लिड के अंदर रखना एक इंडियन स्टेट क्राफ्ट रहा है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज वहां के लोगों ने बहुत पे किए हैं। जैसे आफ्सपा वहां पे इतने साल रहा, गए, इतना टॉर्चर हुआ, इतनी मुश्किलात वहां के लोगों को आई। तो अब जैसे अब आफ्सपा की बात होती है तो खौफ होता है कि आपस में तो जो लड़ रहे हैं वो भी हो रहा है जो बहुत बुरा है, लेकिन वापस आर्मी आ जाती है इसी आफ्सपा के साथ वैली में, हिल्स में अभी भी आ रहा है लेकिन वैली में आ जाती, तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे लोगों के लिए होंगे वो बहुत बुरे होंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ मिलिटराइजेशन इन सिविल लाइफ। तो ये सब दायरों के बीच में बहुत समय, और जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि एक टेंडेंसी है कि जो भी सरकार यूनियन गवर्नमेंट में होती है वही पार्टी अमूमन किसी ना किसी तरह मणिपुर और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंट्रोल में आ जाती है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमी है जो दिल्ली से चलती है, उसके रहते पार्टी अफिलिएशन इतना मैटर नहीं करता। तो कांग्रेस बहुत साल वहां पे सरकार में रही, उसमें भी दिक्कतें आई लेकिन हमेशा एक अटेम्प्ट रहा मैनेज करने का और समुदायों को आपस में बिठा के बात करने का। और इसमें समुदाय के कई हिस्से हैं, वहां के अंडरग्राउंड ग्रुप्स या मिलिशिया ग्रुप्स बोलिए, इंसर्जेंट्स बोलिए, वहां के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका रिश्ता आम आदमी से भी है और वहां के इंसर्जेंट ग्रुप से भी बहुत अच्छा है। वहां के कई अलग अलग किस्म के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, जिनकी आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो शांति भी बहाल कर सकते हैं और गुस्सा आने पे शायद शांति भंग भी करवा सकते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी पे। उन लोगों के साथ डील किया है यूनियन गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बार बार वहां पे एक तरीके की शांति लाने में। ये जिस टाइम बीजेपी सरकार में आई पहली बार मणिपुर में और जिस तरीके से आई, हम लोग जितने वहां मणिपुर में बात करते थे हमें साफ दिख रहा था कि डायनामिक्स इन सब कम्युनिटीज, इनके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंसर्जेंट ग्रुप्स
और उनका रिश्ता यूनियन गवर्नमेंट के साथ ये ठीक है, शुरू हुआ। और मैं अभी यहीं रुक। हाँ नितिन, क्योंकि हम पॉलिटिक्स पर अभी हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले जो है मैं मिस्टर यशु आजाद को जोड़ना चाह रही हूँ, जो काफी देर से हमें हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। मिस्टर आजाद, जिन बातों का जिक्र किशलय ने किया है, नितिन ने किया है, द रोल ऑफ इंडियन स्टेट क्राफ्ट, द रोल ऑफ इंडियन एजेंसीज एंड द रिलेशंस विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स एज वेल, कितना बड़ा आप इसे प्रॉब्लम का पार्ट मानते हैं, हिस्सा मानते हैं? आप खुद एजेंसीज को लीड कर चुके हैं, आप आईबी के इंपॉर्टेंट पोजीशंस को हैंडल कर चुके हैं। हाउ स्क्यूड अप हैज बीन दिस एंटायर प्रोसेस, जो शायद कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की सोचता है, रिजॉल्व करने की नहीं सोचता? सर अनम्यूट कर लें खुद को। धन्यवाद स्मिता, आपने मुझे न्योता दिया इस परामर्श विचार में आने के लिए, और मैंने तीनों एक्सपर्ट्स को बड़े ध्यान से सुना। मैं 3 स्तर पे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ स्थिति के बारे में कि स्थिति भयावह जैसा कि आपने कहा, उस समय आई टोटली एग्री विद दैट। 2001 में करीब 100 लोगों की जानें गई थी, और इसमें तो 110 का आई थिंक आंकड़ा शायद क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट की जो भयावह समस्या है, 46 दिनों से इंटरनेट नहीं है, तो सूचना तो खैर आने में दिक्कतें तो हो ही रही हैं, लेकिन आप वहाँ के छात्रों का सोचिए, एंटरप्रेन्योर्स का सोचिए, IIT-जी की जो परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशंस हैं, और इस संबंध में हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे मणिपुर में अफसर हैं, नॉन अफसर हैं, वो सारे बता रहे हैं कि सबसे भीषण समस्या अभी इंटरनेट की है। इंटरनेट की आज़ादी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, जैसे हम आप दूसरे से चर्चा करते हैं, उसी तरह इंटरनेट एक्सेस perhaps is the most important thing in a democracy, and after 46 days if you cannot restore freedom, it's extremely unfortunate. दूसरी बात स्थिति के बारे में ये है कि स्थिति अब इतनी भयावह हो गई, जैसा कि विजेता जी ने भी कहा कि एम्बुलेंस जा रही है, मेथी उसको जला दिया गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एनार्की which is very, very difficult. The third situation about the situation which is extremely worrying is 450 अगर आर्म्स चले जाएं और उसमें से सिर्फ 1000 अगर आए हैं, तो इसका मतलब कि स्थिति में कोई बेहतरी नहीं हो रही है। अब आइए कि सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि सुरक्षा के संबंध में ही मैं मणिपुर कई बार जा चुका हूँ। Security situation, I understand the terrain is difficult. That is one. And now that is why the vigilante groups in the various villages, the Kukis or the other ethnic groups, are defending their own villages on their own. The other thing which is extremely worrying is how much of arms have been passed to the militant groups. That's another critical area which needs to be looked into. And mind you, Manipur का 350 किलोमीटर बॉर्डर म्यांमार से है। इसमें से कितने उधर गए हैं हमें नहीं मालूम, या कितना आर्म्स उधर गया है, और ये सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं, AK-47s हैं। इसलिए मैं समझता हूं जब हम सुरक्षा स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो सबसे जो अहम विषय है वो ये है कि आर्म्स वापस कैसे लाए जाएं। क्या ड्रॉप बॉक्स बाहर रखने से और अपील करने से हमें आर्म्स मिलेगा? क्या समय आ गया है कि हम एक टफेस्ट सिचुएशन अप्लाई करें? बिकॉज देखिए, जहां तक वार्ता का संबंध है, जहां तक इंडियन स्टेट क्राफ्ट का संबंध है, वो तो दूसरी चीज है, लेकिन सबसे पहले कानून व्यवस्था को हम कैसे वापस ला सकते हैं, ये सबसे गंभीर समस्या है। और इस बीच में जब अटैक्स हो रहे हैं विलेजेस पे, जब आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि RAF यूनिफॉर्म्स में व्हीकल्स का वैंडलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स द सिचुएशन इज सीरियस। इसके पहले एक और चर्चा में यह भी बात हुई थी कि असम राइफल्स एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये कर रहा है, और मैंने सवाल किया था कि शायद ऐसा प्रश्न हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जब ये वैंडलाइजेशन की बात देखी तो आई वाज एक्सट्रीमली अपसेट। अब बिष्णुपुर में जो नेशनल हाईवे है, उसमें कॉन्वॉय ऑफ 200 सोल्जर्स
They are, stopped there. They are being checked by the, vigilante groups. Your 20 tons of rations go bad. This shows that the situation is really getting out of hand. एक चीज जो मैं ये बताना चाहता हूं कि the security advisor is a very very competent guy, Kuldeep. He has led the CRPF, which has been on ground in the Northeast, J&K, and all the other places. But the question is what? The question is of coordination. Unless you have the right coordination between the central forces and the state police forces, I mean, it's not going to achieve any result. And as rightly pointed by you or Vijeta, that in the entire meetings, DG Donkel was, absent. Now, these are the issues in the security environment which needs to be sorted out by the Home Ministry first. And then I come to the other situation that, Smita, I am really aghast when you have a situation like this, and rightly said by one of the expert, अगर ये स्थिति यूपी, बिहार या JNK और कहीं पे होती तो मालूम नहीं क्या हो जाता. सारे अखबार वाले, सारे टीवी चैनल्स वाले अब शुरुआत करते सुबह से रात तक. लेकिन मणिपुर की जो यह स्थिति है, इसके बारे में मीडिया जो है, शायद 10% आपके ऐसे लोग हैं जिसको उठा रहे हैं. So the first thing is, if you want to bring peace, if you really want to give a signal, why isn't a president's rule, put over there Manipur? I mean, the only thing cookies are shouting about, or the other groups are shouting about, they are saying that the CM is partisan or he's incompetent to hold. The DG is incompetent. So if you've got a man from another cadre, Rajiv Singh, as the DGP, आप देखिए किस तरह का लॉजिक वहां चल रहा है. बाहर से आपने DGP लाए हैं, बाहर से आपने सिक्योरिटी एडवाइजर लाया, लेकिन मेन चीज जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको आपने कहते हैं उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए प्रेसिडेंट सूट नहीं आया है. एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा स्मिता, वो ये है कि आप देखिए ये जो स्कर्मिशेस इन वेरियस एरियाज में हो रहे हैं, there are a lot of people with vested interests who want this to continue because they want to show their loyalty to their, ethnic groups. So they are creating this and announcing very proudly कि देखिए हमने आज 2 गाड़ी उनके चला दिए, इनको 2 को इंजर कर दिया गया. So what is the issue now? The main issue is peace committees. जब हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स होते थे छोटे लेवल पे, सबसे पहला हमारा काम होता था take toughest action to control the situation on ground, which is the need of the hour. The second is, if you form a peace committee, there are some of them who cannot join because of the fear of their own ethnic community कि तुम कैसे बन गए सरकारी इसमें, you're a sarkari, you're a renegade, you're a traitor. वो उसलिए नहीं बनते हैं. Therefore a consent was very important to tell them, so they briefed their own. The other thing is, the ethnic communities में अगर आप वही लोगों को लोगे जो politicians हैं, तो वो तो अपनी बात करेंगे, ये solution तो solve होगा नहीं. That is why it is extremely important to have people who can have a dispassionate look at the various demands. And lastly, देखिए इंडियन स्टेट क्राफ्ट में बड़े ही नम्रतापूर्व ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मसला है इसमें हम सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि स्टेट के पास और चारा क्या था. ये जो सिचुएशन है, दिस इज फ्रोजन इन टाइम. मैतीज का जो लैंड राइट्स है, इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू. कुकीज का जो हिल डेवलपमेंट एरिया ऑटोनॉमी की बात है, इट्स अ रियल इशू. जब आप कुकीज की बात करते हैं तो नागाज विल डिमांड द सेम थिंग. इस समस्या का क्या हल है, ये सरकार अकेले नहीं कर सकती है. पॉपी कल्टीवेशन की बात है, क्या पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए? क्या बॉर्डर्स पे जो इमिग्रेशन हो रहा है या वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं की जाए? तो मेरे राय में इसके लिए एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कंटेम्परेनियस हो, जो आज के इसमें क्या हो सकता है. आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबको बुलाइए कि हम सिर्फ कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते. मैती के लैंड राइट्स के बारे में हम क्या करें? क्या हम उन्हें कुछ और एरिया दे सकते हैं?
क्या हम डायरेक्ट बजट कुकी के नाम पे दे सकते हैं? क्या उनको सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिंग राइट्स मिल सकता है? तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की आवश्यकता है। और दूसरा स्मिता, जो मैं बराबर कहता हूं, जब हम 10 साल पहले मणिपुर के बारे में हमने शुरुआत की पढ़ने की, जानने की, तो इट वाज द ज्यूल ऑफ इंडिया, surrounded by 9 hills with an oval-shaped valley, beautiful, bamboo industry, handicrafts, vagara, vagara. And I went there and you saw the beauty. The first thing when I was, even chatting once with the governor, I said, sir, this is a land which will be great for tourism. It needs a Niti Aayog to go there and talk about development, entrepreneurship, industries, so that jobs, once the jobs and the development and the economy booms, that is the only way for this solution. And as far as right now, the last thing I would say is, yes, it needs much, much more from the center than before. ओके, सो कपल ऑफ पॉइंट्स आपने किए हैं कि एक तो इसमें जो है, और नितिन मुझे पता है आप इसमें आप आना चाह रहे हैं, एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने मीडिया की बात की, और जहां पर हम लोगों की कोशिश है कि हम जेन्युइन डिस्कशंस कर सके इन मुद्दों पर। इनफैक्ट हमारे एक ऑडियंस जिन्होंने ट्यून इन किया है, उन्होंने मैसेज भेजा है चैट बॉक्स में, रिक्वेस्ट टू मेनलैंड जर्नलिस्ट टू आस्क अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द क्राइसिस इज द आउटकम ऑफ शॉर्ट साइटेड GOI काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम्स, no institutions were created to strengthen democracy. Nitin, coming to this point, क्या आपको लगता है कि एक तो आप जो points add करना चाहते हैं, उसमें if you could also tell me that while we don't want to put tags on any community, but as journalists, is it also important जो हम कहते हैं कि अगर clear हो कि perpetrator कौन है, तो उसको you then mention it in as many words. Yes. If there are metis जो नाकास को ब्लॉक करके कुकीज पे अटैक कर रहे हैं, then it needs to be said out in categorical terms. Yes. If cookies are hitting out, retaliating, with arms and ammunition, then it needs to be said out. Are we trying to also play safe by balancing it out that there is one perpetrator who's more clearer than the other in this case? So 2 or 3 things, Smita, and thank you for giving me the opportunity. One, I would partly disagree with Mr. Azad, and I would say कि मेरे असेसमेंट में और समझ में स्टेट और सेंटर का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, जो जहां पे ये सिचुएशन को आने दिया है। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, में इन तीनों को एक अलग अलग सोचता हूं और बोलूंगा। हम जानते हैं कि ये फ्रिक्शन कुकी समुदाय और मैते समुदाय के बीच साल सवा साल से, या थोड़ा ज्यादा ही बोल सकते हैं, जहां से आपस में दिख रहा था, बनते हुए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, घरों में बात होती थी तो पता चलता था ये हो रहा था। ऐसा स्टेट जहां पे इतना मिलिटराइजेशन है, इतना इंटेलिजेंस का प्रेजेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ऑब्जर्व रहता है, क्योंकि जैसे आजाद साहब ने भी बोला, बॉर्डर है, एक कॉन्फ्लिक्टेड बॉर्डर है पास में, वहां पे ये मानना कि स्टेट को पता ही नहीं था ये सब हो रहा है और अचानक फ्लेयर अप हो गया, मेरे एक्सपीरियंस में नामुमकिन है। होने दिया गया, कौन रिस्पॉन्सिबल था कि ये नहीं नजरअंदाज किया गया, या किसकी एक्टिव पॉलिटिक्स थी कि ये हो जाए, वो चीजें अलग हैं। बट समुदाय पे छोड़ देना और बोलना ये एथनिक क्लैश है और हिस्टोरिकली ये दो समुदाय तो लड़ते रहे हैं तो ये होना था, इसमें स्टेट क्राफ्ट का रोल नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज्यादा स्टेट क्राफ्ट, स्टेट एस कैपिटल कहे, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स और यूनियन गवर्नमेंट का रोल में रहा है। समुदाय, जैसे मैंने कहा, हमेशा फ्रिक्शन में रहे हैं और सालों से, दसियों सालों से ऐसे हैं, लेकिन जब ये फ्लेयर अप होते हैं और इस हालात तक पहुंचता है, दिस इज अ कंप्लीट डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द स्टेट एंड द सेंटर. And as Azad Sahab also said and Pishle also said, head should have rolled for something like this. देश के किसी और पार्ट में होता तो head would have rolled for this. Even in a government like this, which is very defensive, कि किसको हम अपने लोगों को अपनी जो स्टेट कंट्रोल करते हैं वहां से अपनी पार्टी को ना हटाए, even then it would have happened. It tells you about the relationship of mainland India with Manipur. क्यों ऐसा हो सकता है? To come to your part about how media, and I think Azad Sahab has also rightly talked about it, कि मीडिया का क्या रोल रहा है, कैसे हमने कवर किया है, और कितना, विजेता बोल रही थी, कितना ब्लाइंड स्पॉट हमारे लिए बना रहा क्योंकि स्टेट भी इंफॉर्मेशन नहीं आने दे रही है। 3 चीजें मैं कहूंगा।
पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स देखें और आज की कॉन्फ्लिक्ट्स देखें, एक जो खास डिफरेंस मुझे दिखा है कि इतना ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया कैंपेन्स चले हैं कम्युनिटीज की तरफ से, जो पहले कभी नहीं होते थे। और ये कहने को है कि इंटरनेट बंद था तो लोग वहां से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं जानता हूं और हमारे समुदाय में सब लोग जानते हैं कि बहुत एक्टिव कैंपेनिंग, डिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है पिछले 40 दिन में। वो कहां से हुई और क्यों स्टेट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि स्टेट अगर ये कंट्रोल करना चाहता नहीं कर पाता। लेकिन आप हजारों मीम पेज, आप हजारों डिसइंफॉर्मेशन के रोज सुबह से रात तक समुदायों से आते हुए स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं क्योंकि समुदायों में मेरे दोस्त हैं, परिवार है, तो मुझे तो रोज सुबह से रात तक दिखते हैं और इतना उसमें डिसइंफॉर्मेशन है, वो मैंने कभी पहले नहीं देखा और वो आग लगाने का काम भी कर रहा है। दूसरा, इसमें जो जर्नलिस्ट मेनलैंड इंडिया से मणिपुर की तरफ गए और रिपोर्टिंग करा, और हमारे भी कुछ मित्र वहां पे हैं, मैं कहूंगा कि हम लोग की जनरल समझ मणिपुर की कम रहती है। हम लोग जो इमेज उठाते हैं उस इमेज के साथ चल पड़ते हैं, तो जो जहां पहले पहुंचे और पहले आगजनी देखी वही कहानी बन जाती है। तो इम्फाल पहुंचे तो इम्फाल में हुआ तो पहले वो कहानी बोल दी, फिर लंका 2-3 दिन लग गए पहुंचने में, थोड़ा हिल में है, दूर है, कट ऑफ था, वहां पहुंचे तो वहां की कहानी बोल दी। किसी ने बोला हिंदू क्रिश्चियन की कहानी है तो पहले उसको बोल दिया ये हिंदू वर्सेस माइनॉरिटी क्रिश्चियंस की कहानी है। तो आई थिंक जर्नलिज्म इन पर से हैज डन अ ग्रेट डिससर्विस इन द लास्ट 30 days. I must admit it is extremely difficult to report from conflict area जहां आम सिटीजन और आर्म फोर्सेस खुद नहीं मूव कर पा रही हैं। किसी जर्नलिस्ट के लिए मूव करना with safety and to write and to feel safe is horribly difficult. But I must say, in much of the reportage I've seen, it's been shameful. Basic standards of conflict reporting have not been followed. 4 लोगों ने बोला सब उन्होंने मार दिया हमको तो वो भी छाप दिया। दूसरी साइड के 6 लोगों ने बोला कि नहीं सिर्फ वो साइड के लोग मार रहे हैं तो कोट अनकोट करके छाप दिया। जर्नलिज्म इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इज ग्रेट स्टैंडर्ड्स। यू डोंट पब्लिश वॉक्स पॉप कि जो जिसने बोला आप लिखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। बट वी डन दैट ग्रेट डिससर्विस टू मणिपुर एंड इट हैज caused a lot of problem. Our journalists have also been foolish and been taken in by the social media campaigns from both sides. Nitin, if I can interfere, because intervene, and apologies for that. जैसे अब सुनो इंडिया पर भी there are dispatches from Manipur. There is a reporter who's on ground, ग्रीष्मा, वो भी जाकर लोगों से बात कर रही हैं जिन्होंने इस तरह से अटैक्स फेस किया है, हम लोग के शिकार हुए हैं। अब ये सिचुएशन में अगर आप कह रहे हैं कि आप वॉक्स पॉप रिपोर्टिंग ना करें, लेकिन अगर आपके पास वो बंदे आ रहे हैं जो आकर कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय ने हमारे घर को जला दिया है, क्या आप उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे? तो फिर ये भी तो कहा जाएगा कि आप बातों को जो है you're brushing it under the carpet. स्टैंडर्ड आई थिंक इसलिए बताएंगे, दे आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग। अगर कोई आपको कहता है कि ये समुदाय आया इसने मेरा घर जला दिया, देयर इज अ स्टैंडर्ड कैविएट यू पुट कि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाई हूं या कर पाया हूं। ये बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं, कोई नई चीज नहीं है। और ये पहली बार कॉन्फ्लिक्ट से रिपोर्टिंग देश में नहीं हो रही है या बाहर नहीं हुई है। लेकिन ये वॉक्स पॉप सिस्टम एक्चुअली जो नॉर्मल समय में काम करता है, किसी को आगजनी हुई, किसी की हत्या हुई, ये रिपोर्ट करना बहुत नॉर्मल बात है, ये करनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से मार्मिक कहानियां ही हम लोगों को शायद जगाती हैं कि मणिपुर की तरफ ध्यान दे। लेकिन ये भी याद रखना है कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस समय पे चल रहा है। अगर आप इसके अवेयर नहीं है, अगर आप अवेयर नहीं है कि वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, और जैसे आजाद साहब ने कहा वहां पे यूजीज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल क्लास है जो इसमें बेनिफिट भी ढूंढ रहे हैं अपना, जिसकी वजह से यहां हम पहुंचे हैं। अगर आप सबको बोले कि ये बड़े कोई 2 एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कम्युनिटी जिंदगी भर बैठी है लड़ने के लिए। आप यूपी में जब पॉलिटिक्स कवर करते हैं, चाहे दंगों की करते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि 6 लोग ये हैं जिनकी पॉलिटिक्स इससे फायदा उठाती है। आप बोलते हैं ये 3 राइट विंग एक्सट्रीम ग्रुप या रेडिकल मुस्लिम ग्रुप हैं जो ये कर रहे हैं। आप समुदाय को डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग किस्म के एक्टर से। मणिपुर में जाके ये कहना कि 2 कम्युनिटीज है जो आपस में लड़े जा रही है पागलों की तरह, तो हमारे समुदाय क्या पागल हैं? हम लोग कुछ अलग है औरों से। हम लोग भी तो आम आदमी है जो नॉर्मल जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं अलग अलग किस्म के, जिनके
किसी का किसी किस्म के पीस में फायदा है, किसी का किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में फायदा है, और वो इंटेलिजेंट एक्टर्स है, वो सोशल मीडिया से 100 पेज की पीडीएफ बना के आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक ही इमेजिनेशन जो मेनलैंड इंडिया में है कि एक गरीब आदिवासी कहीं कोने में पड़ा है बेचारा, जिसके दरिद्रता का हाल है, और आप जाके उसे बचाएंगे, एक सेवियर कॉम्प्लेक्स है इंडियन जर्नलिज्म में भी और इंडियन इंटेलिजेंसिया में भी। जबकि वहां आप जाएं तो देखेंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रेसिव समुदाय है जो इंडियन स्टेट, इंडियन मीडिया के साथ कैसे डील करना है उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वो भी कर रहे हैं। देखेंगे मीम्स, अगर मैं आपको कभी भेजूं, जो मीम्स वहां पे बन रहे, इस मुश्किलात में भी मीम्स बन के ह्यूमर के साथ एक दूसरे कम्युनिटी एक दूसरे से बात कर रही है। मोदी जी को कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अमित शाह को गाली दे रहा है, लेकिन इस है। और ये जर्नलिस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ग्रुप्स बन रहे हैं कि जर्नलिस्ट आएगा तो उनके साथ कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा, किसको नहीं बात करने देनी है। तो एक हमारा सेवियर कॉम्प्लेक्स कि हमें लगता है हम मणिपुर में जाके वहां के लोगों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ बिलीविंग एंड रिस्पेक्टिंग कि दोनों कम्युनिटीज के लेजिटिमेट डिमांड्स हो सकते हैं, दे माइट डिसएग्री विद ईच अदर, they may be at this point at extreme ends of the spectrum right now, but both of them are intelligent, resourceful communities which have dealt with, forget the journalistic part, they have dealt with the Indian state for 50 years in this conflict zone. They have dealt with, they are sophisticated actors, they are not simple naive fools that we would like to believe and go there and save them. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दैट यू हैव मेड, और इसको मैं इनफैक्ट किशलय के साथ भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी ऑल्सो। हमारे चैट बॉक्स में विशाल परिहार पूछ रहे हैं, किशलय, इन केस इफ यू वांट टू टेक अ शॉट एट दिस, कैन अ सुओ मोटो केस बी वर्कड ऑन दिस इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन मणिपुर। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब उड़ीसा में इतने लोगों की मौत हो जाती है, कोई हेड्स रोल नहीं होता है, तो ऐसा इस केस में भी कुछ नहीं होगा। योगेश कुमार कह रहे हैं कि ये सेंट्रल की गलती के कारण मणिपुर इस हालात में आ गया है, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा देना एक ग्रुप को, वो भी सेंटर के द्वारा, तमाम इन चीजों को जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट लेट मी आल्सो वेलकम प्रोफेसर खामखान इनफैक्ट स्वान हॉसिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। Kishala, if I could come to you first, give us your thoughts on the questions raised, and also really when it comes to the reportage, Nitin said that there are global norm standards जब आप conflict reporting करते हैं, लेकिन is it also a fact कि a lot of the media organizations within Manipur today are perhaps owned by the Meitei community, by the majority community? Is that a problem there? You know that is also adding, जो सरकार की जो नीतियां रही हैं, जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मुझे बहुत सारे आर्मी के जवान जो मणिपुर से बाहर हैं लेकिन मणिपुरी हैं, वो कॉल करके कह रहे थे कि मैम हॉटलाइंस में सिर्फ मेतीस को रखा गया, कुकीज कैसे बात करेंगे। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूरा प्रोपोर्शन स्क्यूड अप है, उसमें मेतीस हैं। सो दीज हैव बीन एडिंग अप टू आल्सो यू नो व्हाट वी आर सीइंग टुडे। Smita, you'll agree with me that the general standards of please bear with me, my voice is really not helping me today, but the general standards of journalism has really deteriorated, and that is all over the place. We know how many media companies are now owned by agenda driven, vested interested parties who are now close to the government. The same would be in each state. I mean, there was a time when Andhra Pradesh, before bifurcation, had some ridiculous number of 250, 300 channels, and most of them were owned by contractors or by politicians. It's just ironical that in the NDTV newsroom in 1995, when we said that we will be doing the 9 o'clock news, someone from the PMO, bureaucrat and former bureaucrat from Andhra Pradesh, had called up my employer, Pranoy Roy, to say that how can a private news organization do news in India? Because till then, news was supposed to be done only by the government. So it's just ironical that in its own state, news is done by all private players today. Yeah, so the general standard is really low. In conflict zones, it has been a perennial problem that journalists do parachute journalism. They come from Delhi or from other places. They get a sense by speaking to fixers or stringers. They go back without really feeling the
singe of what happens after that. I spent a long time in those areas, but yet I was not like living in Manipur. I was living in Guwahati. I would go to Manipur and come back, go to Nagaland and come back. I was insulated with the organization that I was working in. But imagine my stringer, who is still today in Churachandpur, who provided me with the best stories of my career, whose family situation is terrible, who is not being able to earn a single rupee. I doubt the information that he's going to give me today is not going to be biased, because these are people who become embedded with the government, with the law enforcing agencies. The same thing happens in Kashmir or in Dantewada. It's nothing new. And to use a cliche, truth is the biggest casualty in conflict. So, and our effort should be to doggedly try and find what exactly is happening out there. Which Vijayata said, our job is to sift through, volumes of information coming. And these days, it's even more because of the speed in which information comes, and various appliances and various apps that kind of can create and, morph information in ways that can be extremely violent on the ground. So yes, media is a problem, but I think, in Manipur, particularly for a very long time, since the time I was there, and I'm giving the reference of 2001, because 2001 is the closest reference that I can find of what's happening today on ground. I would be sitting in the hotel room trying to do a phono with my office, and there would be actually groups of people sitting in my room, monitoring what I am speaking. So what Nitin was saying, that their media strategy, media management is way beyond what you would find in a Chhattisgarh, Dantewada, Jharkhand, Jammu and Kashmir. I mean, even in Jammu and Kashmir, I've never encountered the kind of close control that groups, and these are groups like, they're not armed groups. They are simply, and they, after the conversation, we are sitting and having tea together, but in a way they are influencing you, in trying to influence you or trying to tell you. The same would happen in the Kuki areas with all the Kuki leaders out there, which were that time in suspension of ceasefire, and one could meet them. The other problem, which I think the media fails to do and must at least attempt to do, is to contextualize. Even today, Smita, when we are speaking, we are taking for granted a lot of things. We are taking for granted that people know where Manipur is. People know the history of Manipur. Or if I tell you that this morning, I actually heard Sanayama talk about the Kuki-Meitei clash. Now, anybody in India would know what I'm talking about? No. Would America know quickly Sanayama? I doubt. How many people in the defense ministry, maybe home ministry, some old hands would know what Sanayama. Sanayama or R.K. Meghan is probably India's tallest and biggest armed leader, separatist leader, who ran UNLF for the longest time, very well-organized guerrilla movement. He's also, if you leave the left-wing extremist leaders, Sanayama is still, would also be one of the most educated of separatist leaders in the country, who went to Jadavpur University to either study, I think, international relations or comparative literature, I've forgotten. But this morning he was speaking about the Kuki-Meitei clash. My fear, and this is again, I'm saying that one is to contextualize, the second is also to flag the fears. And my fear is, I don't think so. I want to respond to the suo moto. Yes, people should go and file cases. That is their job. They should be filing PILs and other things, which is very important. And I'm glad that people are at least mentioning that. But I think what we need to also flag is Yashwardhanji would agree to this, or at least will have a response to this. When the law enforcing machinery or the governance is absent, then you get the vacuum. And in Manipur, again and again, we've seen when this vacuum happens, people with vested interests, or the fringe elements, as we call it, I don't know why we call them fringe, because they're pretty mainstream actually out there in Manipur.
they find that vacuum to come and take over. If it is not going to be Sanayama, it's going to be someone else who wants a lease of life. There is China lurking on the side. I don't know why Mr. Modi doesn't realize the gravity of the situation. China had earlier meddled with the affairs out there. There was a long period when China lost interest, saying that you guys are too many groups out there. I can't deal with too many groups unless you all come under one umbrella group. It's not like China spoke to me, but these are, one knows from various sources. In fact, Sanayama once told me this, where he was thinking of a Mongoloid homeland. Now, everyone in those parts thinks of a homeland. There's a Kuki homeland, there's a Naga homeland. So everyone wants a homeland. And, now you don't know what to do with those homelands. The other context that I want to, bring up to speed to your audience, Smita, is that in 2015, 9 Kuki bodies were left in the morgue. They wouldn't bury those bodies because they were killed in police firing, and they were not buried for 632 days. I'm just giving you an example of the doggedness of the people out there. Will not give in. They don't give in, whether it is a Meitei, whether it is a Kuki, whether it is a Tangkhul. It is the characteristic of that state for some reason. I can't really explain that, but they are and they are extremely modern in many ways. But they're also dogged, determined lot. Okay. Also, the other context that you need to, the audience needs to know is that in 1993, there was a deadly genocidal, I'm not calling it genocide because the definition of genocide is a little different, but a genocidal attempt by the Nagas in killing the Kukis. The Kukis still keep continuously demanding justice for that. In 1993, if I'm not mistaken, it was in September, 13 September, when 115 Kukis were slaughtered. Between 1992 to 1997, at least 1,000 Kukis were killed. I am curious why the NSC and IM or the Tangkhul leadership is very quiet this time. I am given to understand another context, that there is a violent, volatile situation across the border in Myanmar going on for the last 2.5 years. And the Myanmarese junta has been cracking down on its population. PLA, one of the Meitei Valley-based groups, is apparently signed some kind of a deal with the Myanmarese junta to work as a vigilante armed group for them, killing their own people. The PLA apparently, allegedly, has signed by, I don't think that they've signed some memorandum of understanding, but they have come into some kind of understanding with the Naga groups. And the situation is that we will help you with the flushing out of your Myanmari civilian population if you allow us a slice of the golden triangle, the drug money. Now, I think these are the little blocks or the dots that need to be there when you talk about Manipur. Manipur, we are talking about an extremely sensitive border. We are talking about a border across which, to my estimation, and you may fact check this, 10% of the world's underworld economy thrives. And when I'm saying 10%, it could be 5%, it could be 12%. I'm just making it up, but I'm just saying a substantial amount of world's economy. What is the world's underworld economy? World's underworld economy is made out of narcotics, of gun running, of human trafficking, of wildlife smuggling. All 4 happen through this area. The conduits are the same. We don't know who the kingpins are. We still know that the purest form of heroin is manufactured in Myanmar, in the Shan state, comes across into Churachandpur and other areas, and that's how it goes to the rest of the other parts of the world. So we are not just talking about an ethnic conflict out here, which seems benign to me. We are talking about an internationally volatile state and border. We are talking about underworld black dollar to the tune of which is stupendous. I mean, if you remember one Colonel Chaudhary, who was the defense PRO, who was arrested, who was smuggling drugs across the border
in the Indian government's defense vehicle. I mean, it is that open. Right. I mean, there are MPs who are arrested with drugs. So drug money, the lucre of drug money, of gun running. It is not just the 4,000 arms that are floating out there. There are much more actually would be that. I think if this situation is what the government of India doesn't or realizes or doesn't realize, I don't know, is that they are creating a situation whereby many interested parties can take over things, slipping things out of control for several years more. Absolutely. I mean, there is always the possibility of those who want to fish in troubled waters. And that is something that the government needs to realize. जो हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं, किशोर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए जो नितिन ने भी कही थी कि एक तो जब आप दिल्ली में बैठकर या भारत के किसी और क्षेत्र में बैठकर मणिपुर को समझने की कोशिश करते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं, वहां के समाज को समझिए, वहां के लोगों को समझिए। आप उन्हें एक स्ट्रोक में जो है पेंट मत करें, क्योंकि बहुत अलग सोसाइटी भी है, वहां के लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत संगठित है, मीडिया को कैसे डील करना है, मैनेज करना है। दोनों लंबे वक्त तक जर्नलिस्ट रहे हैं, दोनों ने बताया कि ऐसा उन्होंने ना कश्मीर में देखा है, ना छत्तीसगढ़ में देखा है। वहां इतनी ज्यादा जो है ऑर्गेनाइज तरीके से लोग अपने अपनी कम्युनिटी की बात को पूरे दबंगई से आगे रखते हैं। दूसरी बात है कि नारकोटिक्स का ट्रेड है। आपकी पूर्वोत्तर की जो बॉर्डर्स हैं, सीमा है, वो म्यांमार हो और चीन जैसे दूसरे एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं, और अंडरवर्ल्ड की जो इकोनॉमी वहां पर थ्राइविंग है। तो काफी सारे जो नस्लीय समुदायों के बीच में जो हिंसा है उसका तो एक अपना इतिहास है ही, लेकिन इन तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर जो है कॉन्टेक्सचुअलाइज करने की जरूरत है। Professor Hosing, let me bring you in, adding to what we have been discussing in the last 1 hour, and we will continue discussing it for the next 45 minutes. I understand that, in fact, Nitin may have to leave in a short while, but I'll take a comment from him before he leaves. Tell me right now, Kishal talked about a lot of factors that are combined. At the moment I tweet saying that at least replace the chief minister with somebody who can be efficient, because clearly the chief minister has proved inefficient in trying to control the violence that spiraled out on 3rd of May. People will come in and say, oh, these are basically China and Pakistan driven. How much of the external factor do you see triggered what has happened? There is, of course, the possibility that they can come in as a possible player, but do you see them having been the triggers in what has happened so far? I hope I'm audible, Smita. Yes, you are. Yeah, so thank you for having me, and thanks that you have been able to pull in, very knowledgeable resource person as your panelist today. Yeah, you see, the point that Krishalai has made makes a lot of sense, but I think what we have to really take into account is the elephant in the room, as you rightly pointed out, which continues to be Chief Minister Biren Singh's ways of political leadership. And to what extent does this type of leadership, which has a cocktail of populism and majoritarianism, foreground the spread of violence in Manipur? And to that extent, I find that the kind of corollary arguments, that has been thrown around this, that there is, a certain element of external force which, set the stage for this violence. I think it makes a lot of good political optics to take into account every time when, conflicts flare up, not only in Manipur, but in other parts of Northeast India, that this must have been the hands of Pakistan ISI or Chinese, involvement in all these conflicts. But I think it would be a little bit above board to suggest that, Chinese or for that matter, Pakistan ISI are involved in this current spate of violence. Let us put that aside, and also take into account, some of the important contexts in which these current spate of violence unleashed in the state. Right. So I have consistently maintained from the very start that this is a clear case of institutionalized riot system in which you have
similar kind of riots that happened in Northeast India, in Delhi, in Assam in the 1980s, and the latest edition of which is in Godhra in 2002. And to that extent, the complicity of the state, which has, under the leadership of Biren Singh, a kind of cocktail combination of populism and majoritarianism, have to be called out. And until this truth about the preparing the grounds for and activating and sustaining this conflict is addressed, I think we are not going to go anywhere. I think this elephant in the room has to be addressed, and that is precisely why I think that it's about time that, given that Biren Singh has continued to be in charge of form, continued to be the chief minister, and given that he has totally failed in restoring law and order despite more than 40,000 paramilitary force from the central force, I think it's about time to call out, and fix responsibility from the top. And unless this is done, I do not see any meaningful dialogue or any meaningful peace negotiation heading forward. Having said that, I think it's also important to take into account, some of these important insights that the novelist, Chinua Achebe has talked about in his classic novel called Things Fall Apart. When the center cannot hold, things fall apart. And the kind of the institutionalization that happens in the state over time has also got to be foregrounded in making a full sense of how things go out of hand, right? So if you look at the kind of institutional arrangement in the state over time, you'll find that there are now increasing voice of dissent as well as major disagreement, which is deeply discomfort to it, or try to sidestep or dissolve or dilute existing institutional arrangement. Let us remember for a fact that Manipur is, like most other states in India, a composite state. I think this has also got to be accepted, because this is one of the truths which is often not grounded in the larger picture of political narrative that we build. Because after all, one of the dominant discourse that you keep on hearing from metro-based media, and for that matter, people who are not fully embedded in the type of contextual understanding of Northeast or Manipur politics, is that we tend to think that the idea of Manipur is a fait accompli, which has been fixed in time, in space. And let us also remember the fact that this idea of Manipur is a process of evolution, of integration of territories, tribal territories, both northward, southward, as well as eastward, right? So you have a series of map as well as territorial map drawing, which actually amalgamated as well as integrated some of these so-called tribal territories over time. And given that there are contested politics around the fixed demarcated territorial boundary core Manipur, you have different dissonant voice, not only from the hill tribes, but also from the valley communities. Say, for example, the major flashpoint, which laid this present spate of violence, for example, Churachandpur district was bifurcated, as you know, in December 2016. And remember that this Churachandpur district got integrated into Manipur proper only sometime in 1921. Given that after the first World War and the so-called the Zougal locally known, which is otherwise known as the Anglo-Kuki war, you have the reorganization of Manipur's administrative territories to expand and use Songpi, which is now called as Old Churachan, as one of the administrative subdivisions. And since then, in practical terms, you have the incorporation of what we now call as Churachandpur in 1921, which was not even given the name called Churachandpur district until 1983. Remember that this was a district which was categorized as Manipur South District from 1969 till 1983, right? So only since 1983 you have
Churachandpur district proper. And the kind of false narrative as well as distorted narrative to suggest, for example, that Churachandpur areas, which is on the southern tip of Manipur, had been for time immemorial integral part of Manipur Valley Empire, which again is misplaced, because somehow if you look at the colonial archives or colonial record, you'll find that they are clear evidence that the southern tip of Manipur, which is considered to be now Moirang, which beyond which the territorial control or command of the valley-based Meitei kings was considered to be very, very weak and fragile. And that is precisely the context in which, for example, in 1835, you have, before the onset of colonialism, and remember that Manipur came under the spell of British colonial Raj only after 1891. And 75 years before, Manipur came under the spell of colonial Raj, you already have a set of arrangement thanks to the involvement of the British. Remember that the British and the King of Manipur entered into a friendship treaty to mutually aid and support one another since the 1760s, right? Okay. So because of this arrangement, you have a kind of institutional arrangement called the political agency, which was sought to regulate, quote unquote, unruly relationship between the hills and the valley, as it were. So these are some of the institutional historical bearings that in effect foreground why sub-state constitutional asymmetry, in the form of district council or in the form of hill areas committee, which is taken from the leaf out of the Scottish model in the United Kingdom. Professor Hossain, you have all Hossain, these institutional development over time. Yeah. So I'll just intervene you for 1 second because I know बहुत सारी इसमें पहलू हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, उसके पहले के वक्त का इतिहास जिसको आप समझा रहे हैं, लेकिन नितिन को इस वक्त जाना है. नितिन से मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी and then I'll go to Mr. Azad. नितिन, just before you go, आपको लगता है जो बात कह रहे हैं कि ये जो riots हो रहे हैं, violence हो रहे हैं, ये संस्थागत भूमिका में हो रही है, they are institutionalized. क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा कि वहां पे हेड्स रोल होंगे, अकाउंटेबिलिटी तय होगी? क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है. संबित पात्रा जाकर 9 years of नॉर्थ ईस्ट प्रॉस्पेरिटी के बारे में ट्वीट करते हैं. कोई उम्मीद है कि एक सिंसियर एफर्ट होगा वहां पर कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वहां पे लाया जाए? Sure. One, I'll apologize to Professor Housing because of me. You were cut short. I wish I could stay longer and hear you out. Apologies. Dusra, Smita, I would take 2 cues and say, इसलिए I little fear what's going on and where this will go. The fact is, when BJP came into power, जब BJP सत्ता में आई, उन्होंने कुकी अंडरग्राउंड ग्रुप्स लीडरशिप के साथ, जो कि हमेशा उस प्रदेश में रहा, एक रिलेशनशिप बनाया और उस रिलेशनशिप की वजह से वो जीते भी. अब वो रिलेशनशिप टूटा है, इसीलिए बीजेपी के भी वहां सत्ता में कुकी एमएलएस भी हैं जो अब वापस अपने समुदाय के इंटरेस्ट के लिए चले गए हैं. केंद्र का क्लियर है कि केंद्र अभी भी अपने मुख्यमंत्री को बचा के रखना चाहते हैं, जबकि वहां पे क्लियरली डी फैक्टो अब यूनियन गवर्नमेंट वो सरकार चला रही है फॉर की फंक्शंस. अब इस हालात में केंद्र सरकार को, चाहे आप उनको मुख्यमंत्री का आप मैलिस ना माने, इनकॉम्पिटेंस तो बहुत साफ सामने जाहिर होती है. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनकॉम्पिटेंस, दिस यूनियन गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग डिफरेंट. आई थिंक सॉल्यूशंस बहुत सारा स्टेट क्राफ्ट में बाहर बताया नहीं जाता कि मणिपुर में कैसे सॉल्यूशंस लाए जाते हैं. बट द फैक्ट इज कि दोनों ग्रुप्स, अगर बीरेन सिंह की सरकार में मैते ग्रुप्स के पास आर्म्स फ्रीली आ गए हैं, और इसमें बोलने का कोई, आई थिंक इस पॉइंट पे कोई लैक ऑफ एविडेंस नहीं है कि फ्रीली बांटे गए हैं. ये भी सच है कि कुकी ग्रुप्स के पास हमेशा से थे, और वो कितना उनके कंट्रोल में थे, कितने विजिलेंटली बंद थे, कितने बाहर थे, ये सब अगर आप पिछले 1 साल की खबरें देखें तो ये कोई 2 समुदाय के बीच की साधारण आर्ग्यूमेंट या लड़ाई नहीं है. ये 2 ऐसे समुदाय के बीच में है जिसमें आर्म ग्रुप्स नए पैदा किए गए और पुराने हैं, जहां बहुत बंदूकें, जैसे किशले ने बोला, पहले से हैं और स्टेट ने परपेचुएट होने दिए. स्टेट का रिलेशनशिप मणिपुर के ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लोगों के साथ हमेशा से बहुत पेचीदा रहा है, जो वो कभी इस पार्ट में हिंदुस्तान में बता ही देता. तीसरा, आरएसएस ने जो वहां पिछले 8-10 साल में दखल देने की कोशिश करी है,
उसके नतीजे भी साफ जाहिर हो रहे हैं। और हिंदुस्तान में बैठ के ऐसा लगता है कि हिंदू आरएसएस घुसा और ये हिंदुत्ववादी हो गया, ऐसा नहीं है। मैते नेशनलिज्म एक अपने में अलग है। मुझे तो आज दुख होता है जब मैं देखता हूं कि चाहे वो मेरे कुकी दोस्त हो या कुकी समाज हो या मैते समाज हो, उनको ऐसे बोलना पड़ता है कि अमित शाह ही हमें बचाएंगे और देश, ये देश का मैं जय भारत माता की नहीं बोलूंगा तो मैं नहीं बचूंगा। To me, it is a very sad situation for our people to reach that we have to say this to look for protection. In some sense, it seems like I'm looking for the protection from the biggest thug in town, rather than looking from a benign state. Because it is a right, as whether I'm a Kuki or a Maite, to get protection from the state, that the license of violence should only be with the state and not with any other groups. The fact is, it now exists with communities on both sides. The license of violence has been taken over by select segment of societies in both groups, and they are very active and very intelligent players. Again, we must remember, as Kishle and Azad Sahab would say, they are dealt with a much larger state while being such a small minority and a racially discriminated minority for decades. They're not silly players, they're not naive players, they're very intelligent players who have learned to survive in a difficult terrain, in a difficult politics. Now, the state recognizes this. I wonder whether the BJP government in the union today recognizes this as consciously as the state has recognized in the past. I'm sure people like Mr. Azad, who would know 1,000 more secrets than we will ever know about how that state was managed or how it's been controlled, would tell you it has taken deep insight, understanding from the state itself to help people there as well as manage people there. My last one, I'll go with this, I think others will speak, is we should not hurtle down that conversation where we give license to state violence becoming a formal process through AFSPA. I think many of our people have lost lives for decades because of AFSPA. Today, if the army is demanding that we will only work at full energy when AFSPA is there and not under magisterial control, it's a scary situation for people of Manipur to go under. There are long repercussions of turning it into a fully militarized zone yet again in the valley and the hills. Our hope is that the answer is in political solutions. We already have more than 65,000 troops on the ground, if I'm not mistaken. It cannot need more. What it needs is political clarity from the union government and political sophisticated understanding of the people. And again, this, as you were asking, Vijeta, this formation of a committee which you do not have consent, or if you had consent that people had to walk away from that consent, it shows in some sense a degree of incompetence by the Home Ministry as well. Because we must remember at this point, the Home Ministry is running the show largely. It shows deep incompetence in the Home Ministry as well. Let's not blame just the state government for this right now. And I understand that community leaders on both sides are reluctant of saying anything bad about the Home Ministry because that's your only hope. That's why I keep worrying. You know, they seem like the biggest thugs in town that you have to be careful of right now. Instead of the representative government, I wish we people who are sitting from the outside, who have half a leg like me, perhaps inside, are able to deal with the situation and address and respond to the situation with greater respect for both communities than treating them as naive communities which are just at loggerheads with each other. Again, this point on terrorism from across, politics, narco politics from across the border, the pressures on the society here of migrants, I wouldn't say illegal at all, but there is migration, economic migration, distress migration that must be considered. The fact that we must address all communities, the state should and we should as citizens, regardless of whether they're armed or not, but not as terrorists, etc., is very essential. I'll pause here. I wish I could have stayed longer to hear rather than speak, but I'll have to leave. Thank you so much, नितिन सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो है आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा. मिस्टर आजाद, अगर मैं आपसे रिस्पांस ले सकूं इस पॉइंट पर, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट्स की बात की जा रही है, प्लस दी कंसर्न्स कि विल दिस अगेन प्रोसेस facilitate basically the return of AFSPA in full form.
आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, असम सुरक्षा पर्सनल जो है वो मारे जा रहे हैं. What kind of a security solution do you see here moving forward? Number one, I think AFSPA is no answer to Manipur violence or Manipur crisis. Definitely not. There should not be a carte blanche, given to any unit which can, operate with impunity. And the other thing is the over-militarization is something, again, which is not the answer. It is one thing one should fight against in Manipur. And that is why I have been focusing all the time that one of the most serious prime security objectives should be to sap up all the arms from all quarters. There has been ऐसे आरोप लगे हैं सरकार पे कि कि आर्म्स जो हैं वो जनता को दिए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि पुलिस स्टेशन से जो आर्म्स गए हैं वो शायद लूटे नहीं गए हैं बल्कि दिए गए हैं. और इस संबंध में सबसे जो भयावह स्थिति तब उत्पन्न हुई जबकि आसाम राइफल से भी आर्म्स लूट लिए गए. मणिपुर में जो सबसे ज्यादा अभी आवश्यकता है, और मैं इसे बार बार कहूंगा कि इससे सारे आर्म्स जो कि टैक्टिकली भी दिए गए हैं और अदरवाइज भी दिए गए हैं, उनको सब वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि एक तरह का माहौल पैदा हो कि carrying arms is not something which will be allowed in Manipur. That is the most important thing. Number two, I would say कि ये ज्यादा आवश्यकता अभी ये है कि सेंटर का रूल कब होना चाहिए जबकि सरकारें फेल कर जाती हैं, जबकि सरकारें अपने जो कार्य में दक्ष नहीं होती हैं और बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती हैं. अगर अभी के सिचुएशन को हम कोलैप्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और इसलिए ये बहुत ही आवश्यकता है कि प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे लाया जाए. नहीं तो सारे कम्युनिटीज जो आप में विश्वास रखते हैं कि आपके हैंडलिंग से चीजें हो जाएंगी, वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे अगर आप यही व्यवस्था को रखेंगे. नंबर 4 मैं ये कहना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों किसले जी ने और नितिन जी ने भी इस पे काफी बात की, वो मीडिया की रिपोर्टिंग के बारे में. अभी जो स्थिति यहाँ पे है स्मिता, वो लोगों को पता लगता है अरे 9 लोग चामन लोग में मर गए, 4 जो है वहां उनको जला दिया गया, 5 को जो वो रिपोर्टिंग होती है वो सीधे यहाँ पे दी जा रही. लोगों को कोई एक पिक्चर मणिपुर के बारे में नहीं पता लगता है. एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक आम नागरिक को जो कि कहीं भी हो उसे हक है कि हमारे मणिपुर स्टेट में क्या हो रहा है, और इसलिए चाहे वो गृह मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय को एक बार दिन में आके जो स्थिति वहां पर उनके अनुसार है ये बताना चाहिए, ये उनका कार्य है. और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पीस कमेटी की जो बराबर चर्चाएं हो रही, ये एक मजाक साहब हो गया है, क्योंकि इतने दिन से पीस कमेटी है, रोज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं इसमें जाना चाहता, मेरे से पूछा नहीं गया. तो इसलिए पीस कमेटी को स्क्रैप करें. एक प्रेसिडेंट्स रूल लाके आप एक नए किसी व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही जिसका एक इमेज अच्छा हो उसके द्वारा अगर आप कोई पीस कमेटी बनाएं, इसमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स भी रहना चाहिए, इसमें किशले साहब ऐसे, नितिन देसाई ऐसे लोग भी होने चाहिए जिससे कि लोगों को विश्वास हो कि हाँ ये किसी ग्रुप के फेवर में नहीं है बल्कि स्टेट के फेवर में है. और एक जो बात जो कि बहुत ही अभी जरूरी है वो ये है स्मिता कि देखिए हमने एनालिसिस तो कर लिया, ये बात सही, कॉपी कल्टीवेशन की बात, इन्फिल्ट्रेशन की बात, आर्म मिलिटेंट्स की बात, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बात. सवाल ये है कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस, एंड देयरफॉर देयर हैव टू बी मॉडल्स ऑफ रिकंसिलिएशन. और ये मॉडल्स ऑफ रिकंसिलिएशन हैज टू कम. आफ्टर ऑल ऑन ग्राउंड we have to battle that main elephant in the room. What do we do about Meitei land rights? What should we do? What should we do about Kuki asking for some kind of autonomy? Can they be? It can't be a Kuki land. It can't be sovereignty. It can't be nationalism. It has to be within the system. So what can we offer to Kukis? What can we offer to Nagas? Because Nagas will be asking the same. What should we do on the border? How much of immigration should be allowed? So we have to have reconciliation models now, and time for that has come, and it should come from all quarters. In fact, the center
The point you made was to get a very, very good able administrator to come and ask for the reaction, and also I would say have an all-party meet to bring some kind of solace to Manipur. No, India is looking out for you. India also feels for you. Okay, I'll come back to Professor Hosing and I'll talk to you about the solutions a little bit in detail. But I'll take one final comment from Kishalai because he needs to leave. Kishalai, जो बात नितिन ने कही कि ये फेलियर अगर बीरेंद्र सिंह की है, क्या ये गृह मंत्री और मंत्रालय की फेलियर नहीं? अमित शाह वहां जाते हैं और उसके बाद भी अगर ये हिंसा जारी है, तो where does the buck stop? ये फेलियर किसकी है फिर? Smita, I think the failure or the buck stops at the Prime Minister's door. On the 3rd of May, when the trouble started in Manipur, Pradhan Mantri कर्नाटका में कैंपेन कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने पापुआ न्यू गिनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश उन्होंने घूम कर आए. लेकिन आज 48 दिन के बाद भी प्रधानमंत्री से हमें कोई टिप्पणी नहीं मिली, कोई ट्वीट, जो उनकी बहुत बड़ी प्यारा वो है, पास टाइम है, लेकिन he has absolutely not paid any attention to it. And I think I would put the blame entirely, or at least the responsibility at his footstep, at his door, for 3 reasons. One, he has failed to protect the lives of his country, of the citizens. That's the first simple thing. Second is that he has protected a government which should have been showed the door. I mean, there is absolutely no reasonable evidence that he can show that the Birendra Singh government has tried to protect lives of people or has performed its role. Number 3 is that he in his own pronouncements talks about Act East. The government of India for the last 30 years have been trying to turn its gaze and change its policy on the Act East policy, which is where you basically look at business, trade, your geopolitics, everything on this side. And that is the Manipur border is an extremely important part, a doorway or the corridor for Act East. Seems like he is not serious, or the government of India is not serious. And number 4 is that we know for years, for decades, that how the Indian army has been corrupted by overusing them in civilian strife, like insurgency, and the immunity that they have got through Armed Forces Special Powers Act, which allowed them to be corrupt and run a dirty war. You have again pulled the personnel of the 57 Mountain Division into the Manipur situation right now. The 57 Mountain Division's sole job is to focus on the Indo-Chinese border. And that is why I'm saying that it may sound alarmist, but let us not forget that China loves this kind of a volatile situations to work on. So it's a larger security situation. So I'm saying internally, we have failed. The Prime Minister has failed to protect lives of people. Externally, I think, we are making ourselves vulnerable to what can be a potential threat perception to a volatile Myanmar close by and a China awaiting out there and actually watching it. So, and Amit Shah goes to the state 27 days after the strike begins. I mean, a minister goes after 27 days, fails to do anything at all, fails to resolve, fails to set up a peace committee, fails to get a single arm back from the militants. So, his strongman policy of running governance has utterly failed. He then appoints Himanta Biswa Sharma, whose tryst with gun is well known to others, who is not necessarily a man of great, who can claim great governance in his state either. Both are BJP-ruled states. Let's not forget the number of churches that have been desecrated and burnt. Right. Even though no one has been talking about the communal part, and Nitin clearly pointed out that while we think that the BJP, the Meiteis are Hindus, but they have a fusion of Hindus and their indigenous religion, which is Sanamahism.
But in this context, I think it is useful to see what the BJP or the RSS is trying to do. Let's not forget last year what happened in Tripura, the number of mosques that were burnt. There is an agenda that one can read, or a pattern that one can read into this kind of insidious violence. And finally, I think the media, yes, I being a member of that, should concede, should admit that the media has not done really well for itself in Manipur and other areas. Thank you so much. I wish I could stay back, Professor House, to listen to you, but I'm going to listen to the recording of it. Yeah. Thank you so much, Kishalai Bhattacharya, for adding those perspectives. और किशोर ने जैसे साफ-साफ कहा कि the buck stops with the Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि दुनिया भर में हो रहे वाकयों पर हमेशा वो कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं. तो उनकी और ये जो मैसेजिंग जा रहा है, प्रोफेसर हाउसिंग, you know what Kishalai was talking about, that the government at the center is protecting a government, it is not protecting its own citizens here. You know, your thoughts on what do you see as how reconciliation can happen moving forward now? I think the kind of conciliation that we possibly need to envisage for now is that there is this institutional ecosystem which continue to be driven not by, as you said, the politics of the governed, but essentially by electoral politics, which is clear because Amit Shah's 15 days, peace interim period given has utterly failed in restoring, a semblance of normalcy as well as stability in the state. So long as electoral consideration continue to drive the kind of peace or stability or reconciliation that we have in mind, I think this is not going to work. That has to be admitted in the first place. I think the second part, which is true of South African experience, is the fact that if at all you want to have meaningful peace and reconciliation in deeply divided societies like Manipur, I think it has to be accepted in the first place that integrationist or majoritarian policies do not work in deeply divided societies. And given that the past, almost 7 years of BJP rule in the state has led to systematic deinstitutionalization of existing institutional arrangement which accommodate, territorially concentrated tribal groups. And given that there is apparent breakdown of coalitional or power sharing arrangement, right? We talk about the idea of constitutionalism in other deeply divided societies in Netherlands, in Belgium, or in Switzerland, or even in Canada. The kind of institutional arrangement which foreground power sharing arrangement in Manipur has broken down and it has collapsed. And this is precisely what we have to take into account. If at all deeply divided societies were to be held together, integrationist majoritarian policies does not work. The only alternative, therefore, is that reconciliation to be meaningful has to be framed within the accommodationist, not integrationist framework, right? And this truth, I think, which Kisilo has also pointed out, which has been the worst casualty in all this period of violence, have to be admitted that the elephant in the room is Biren Singh's integrationist and majoritarian agenda, which does not work. The third or the fourth is that we have also got to accept the truth and the reality that Manipur, after all, despite all this grandstanding position, is a composite state. And the territorial integrity of Manipur is best protected only within the accommodationist, not the integrationist framework. I think in that sense, three possible institutional architecture, that I flesh out in my Hindu article that was published on 3rd June, I think is pertinent to point out here. And there are three possibilities of reconciliation happening. One, of course, is intercommunal dialogue, given that the level of trust, the level of mutual suspicion and distrust have deeply run. And given that there is no change in the way the kind of political narrative woven around, continually targeting with a xenophobic intent, to malign
or to vilify, a particular communities as illegal immigrants, as foreigners, so and so forth, is not likely to work in the long run. And these to take place, I think there are, as I said, three institutional possibilities. One is reverting back to the status quo ante. That is to say that the status quo ante of an integrated Manipur state should be sustained. And given that there are increasing signs that the kind of political narrative are now being controlled by a very integrationist majoritarian agenda, which is deeply uneased with, discomfort with, and seeks to aggressively dissolve existing institutional arrangement, the kind of possibility is quite dangerous, because it might not work. Because if you revert back to the status quo ante without extant institutional accommodational framework for the tribal communities, I do not see any possibility of going forward. That's one. The second possibility is that if at all we revert back to the status quo ante and try to reconcile, the kind of divide between the hills and the valley, the status quo ante with possible, strengthening of existing institutional accommodation framework might be a promise. And this is precisely why I have been advocating that, for example, there has to be some substantive political action on the ground in terms of respecting community rights or territorial rights, as it were, which have been historically embedded in the political history of Manipur. I have given you the example of the political agency before Manipur came under colonial raj, right? So it has a long pedigree of institutional accommodation to accommodate the distinctive desire or needs of territorial identities and group, of which Manipur is not a unique case. There are parallels across, given, for example, that the Scottish plan, which is encapsulated in Article 371C in a very diluted form, have to be resuscitated and given more robust institutional framework. And this is precisely where I thought that one of the major, discontentment and point of opposition of tribal against the present political dispensation in the state is that Biren Singh's government is deeply discomforted by sidestepping and trying to dissolve over time these Article 371C by sidestepping or diluting, seeking to dilute. In fact, I have written this in the Hindu way back in 2021, when there was this attempt to dilute by incorporating, 9 MLAs from the valley area, so that, the kind of protective mechanism is diluted, and Right. the majority's political decision would, subvert the kind of institutional arrangement for the tribal areas. So in that sense, I think making more robust institutional arrangement might be a way forward. And if this does not work, another possibility is the one that I also talk about, arranging a broad brush overarching separate administrative framework, given that there are antecedent political overtures, both during the Congress as well as during the earlier dispensation of the UPA under Atal Bihari Vajpayee. Remember that way back in 2000, when the National Commission for Reviewing the Indian Constitution was constituted by the Vajpayee government, there was this special, subcommittee which looked into the feasibility of restructuring local governance structure in the whole of Northeast India. And one of the suggestions that they flagged in that particular commission is important, which is that they say is that in the past there had been demand for upgrading existing local arrangement in Manipur areas to the 6th schedule, but there has not been sustained popular movement. There is no serious political movement, quote unquote, right? Now that in the recent wave of violence that we have seen, the kind of popular support for separate administration, whether it takes the form of union territory, whether it takes the form of separate statehood, or whether it takes the form of a more enlarged and more robust separate administrative structure, would have to take into account some of the loopholes in the extant institutional arrangement. I think, therefore, Article 371 and 6th schedule, for example, could be another possibility, whereby some of the good experience of Bodoland Territorial Council, like having a separate budget, having a time-bound devolution of funds,
say within a fortnight, so and so forth, given that there are widespread complaint, not only in Manipur, but in other parts of Northeast India, where you have the sex schedule provisions, that funds are not released on a timely manner, so and so forth. That's another possibility. Another still possibility, which has not been discussed in detail, is a possibility that given that there is existential fear of politically merging with Manipur, given that yesterday, if you read the newspaper report, one of the cabinet minister's house, Nemcha Kipgen in Imphal, is burned down, right? After more than a month and almost a half, which shows that the precarity of the lives of tribal elected representative is real, and which is, and that's precisely where the hopes on choice emerge. And that is why there is now increasing talk that if at all statehood is not guaranteed, another possible institutional innovation could be that, given that Article 3 gives the power to the center to merge territories, why not talk about the possibility of merging these Kuki, Zomi dominated areas with Mizoram within a semblance of territorial council? That is another institutional possibility which I think need to be discussed. And given that the kind of stalemate that we have reached has more or less reached a kind of physical as well as demographic separation between the hills and the valley, I think unless radical constitutional engineering comes about, I do not see that the present stalemate can be broken very easily. Okay, so that's a very important point that you've in fact ended your note with, and I'm also going to wrap up this conversation, but very important insights highlighted by you, which I will be happy to discuss more in fact in the next few days again. Thank you so much, Professor Housing, for joining me here in this conversation. Professor Housing ने जो बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे जरूरी हो जाता है कि आप किस तरीके से इस मामले की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें, इसकी राजनीतिक समाधान ढूंढे और रैडिकल कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग करें जहां जरूरत हो, क्योंकि वो जो दूरियां हैं उसे पाटना बहुत जरूरी हो गई है बिटवीन जो एथनिक कम्युनिटीज हैं और जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वहां की समाज और वहां के तमाम जो है सरकारों के बीच में, भले ही फिर वो आपकी सरकार वो सेंटर में हो या फिर जो है वो आपकी निश्चित रूप से वहां बीरेंद्र सिंह की सरकार हो। सोफिया राजकुमारी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है इनफैक्ट इम्फाल फ्री प्रेस में, जिसमें वो कहती हैं कि ये जो पीस कमेटी बनाई गई है इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मणिपुर में विधानसभा की सीटें 60 है और इस कमेटी में जो है 51 लोग मौजूद हैं, 51 सदस्य मौजूद है, जिसमें महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और एन बीरेंद्र सिंह जिन पर भरोसा नहीं है आखिर वो क्यों इस समिति में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि इस बात पर कंसेंसस थी कि ये एक टोटल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है। यहाँ इस सरकार के बने रहने के अधिकार पर जो है निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जाने चाहिए और हम यही उम्मीद करेंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करेंगे कि आप अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ये बेहद भयावह है। सरकार की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो विदेशी देश हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उस पर भी जो है विदेश नीति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और लोगों को जो है हीलिंग की जरूरत है वो तभी शुरू हो पाएगा जब ये वायलेंस इस वक्त बंद हो, जिसने अब तक कम से कम 110 लोगों की जान ले ली है। तो आज के लिए जो है मैं अब इस कॉन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करूंगी। आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े, चैट बॉक्स में अपने सवाल अपनी टिप्पणियां भेजे, बहुत शुक्रिया। इस तरह के और डिस्कशंस के साथ जल्दी वापस आऊंगी मैं अपनी यूट्यूब स्टेशन पर। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।